سندھ کے دیہی علاقوں میں 60% سے زیادہ بچے ہائی اسکول تک تعلیم حاصل نہیں کر پاتے۔ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ جدید مہارتیں نہیں سیکھ پاتے اور والدین بھی زمین پر پرانے زرعی طریقوں پر کام کرتے ہیں۔ نتیجتاً کھیتوں کی پیداوار کم ہوتی ہے اور کسانوں کا فائدہ محدود رہتا ہے۔ بچے اسکول کے بجائے کام میں مصروف رہتے ہیں اور زرعی عمل بھی پرانے انداز میں جاری رہتا ہے۔ یہیں سے ہوپو نے ایک نیا ویژن متعارف کرایا، پلان فار پراسپیرٹی ایجوکیشن پروجیکٹ، تاکہ دیہی سندھ کے بچوں کو تعلیم کے ساتھ عملی مہارتیں بھی مل سکیں اور کمیونٹی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ اس پروجیکٹ میں تعلیم کو کھیل، شوق اور مقصد کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔ یہاں بچے صرف کتابیں نہیں پڑھتے بلکہ اپنے شوق اور دلچسپی کے مطابق سیکھتے ہیں اور سیکھنے کا مزہ محسوس کرتے ہیں۔ خصوصی ابتدائی تعلیمی پروگرامز اور عملی زرعی لیبز کے ذریعے بچے زمین سے جڑتے ہیں، بیج بوتے ہیں، پودے اگاتے ہیں اور زمین کی زندگی کے عمل کو سمجھتے ہیں۔ جہاں پہلے بچے محنت مزدوری میں لگائے جاتے تھے، اب انہیں وظائف اور اسکالرشپ دی جاتی ہے تاکہ وہ تعلیم جاری رکھ سکیں اور بڑے خواب دیکھ سکیں۔ سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام اور ہوپو کے تعاون سے پلان فار پراسپیرٹی کے تحت زرعی اور ماحولیاتی منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ طلبہ اور بچے کاربن لٹریسی اور کاربن ٹوکن پروگرام کے ذریعے ماحول دوست طرز زندگی، کاربن مینجمنٹ اور ماحولیاتی آگاہی حاصل کر رہے ہیں۔ اسی پروجیکٹ کے تحت یونیورسٹی کے پروفیسرز اور ڈاکٹرز نے ولیج مد اور گوٹ خان صاحب کا دورہ کیا اور اسکول کے بچوں کو پائیدار زراعت، مورنگا اور دیگر غذائیت بخش پودے لگانے کی عملی تربیت دی۔ یہ پروگرام کمیونٹی کی صلاحیت بڑھانے اور معاشرتی خوشحالی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی Mosquitoes love sweet flower nectar first. Yes, all mosquitoes drink flower nectar for energy. But only girl mosquitoes drink blood to make baby eggs. Boy mosquitoes drink nectar and plant juices only. So remember, nectar for energy, blood for baby eggs. Friends, who drinks flower nectar? میل مسکیٹو بائٹ نہیں کرتا، فیمیل مسکیٹو بائٹ کرتا ہے اور یہ بہت ساری بیماریاں دے کے جاتا ہے۔ وائی؟ کیوں؟ کیونکہ جو میل مسکیٹو ہوتا ہے وہ پھولوں کا ایک جوس، پلانٹ جوس جسے کہتے ہیں نیکٹر، آپ نے NECTOR اس میں بتایا جا رہا تھا، نیکٹر پیتا ہے اور اس میں وہ سیلز بھی پریزنٹ نہیں ہوتے جس سے وہ ہیومن اسکن پر بائٹ کر سکے اور بیماریاں دے سکے۔ دم سے اندھیرا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم موجود ہیں ولیج مڈ میں، اسمارٹ کمپیوٹر جو کلاس روم ہے ہوپو کینیڈا نے اسٹیبلش کیا ہے، جو آرفن ٹو پراسپیرٹی کا انیشیٹو ہے ہوپو کینیڈا کا، یہ اسی کی لائٹ کا انیشیٹو ہے، اسی کی لائٹ میں یہ
उसी की अम्ब्रेला में जो है वो ये क्लासरूम जो है ओपन किया गया है। डेली के बुनियाद पे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, चैट GPT, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और दीनी तालीम जो है वो दी जाती है। ये फिरदौस सोलंकी हैं जो क्लास टीचर हैं और इसके पास जो है वो 50 के करीब स्टूडेंट जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और ये डेली के बुनियाद पे जो है वो क्लास। आज इस क्लासरूम के अंदर आप बच्चे, आपकी खुशकिस्मती है कि हमारे पास सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम से जो सीनियर प्रोफेसर हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो आए हुए हैं, जिनमें मोस्ट सीनियर हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अब आप कुछ सीख रहे हैं यहाँ पर। क्या सीख रहे हैं? हाँ, मॉस्किटो के बारे में। और अब आपकी टीचर ने मॉस्किटो के बारे में आपको बताया। इनके बताने से पहले आपको पता था मॉस्किटो क्या है? नहीं। तो इसका मतलब कि आपके इल्म में इजाफा हुआ, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ। तो मेरा ताल्लुक किससे बताया गया है आपको? मेरा ताल्लुक बताया गया है कि मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आया हूं, वहां मैं प्रोफेसर हूं। मेरा काम है इल्म देना, इल्म सिखाना, इल्म फैलाना। ठीक है? आप एग्रीकल्चर के मुतालिक क्या जानते हो? एग्रीकल्चर खेती बाड़ी का इल्म है, हुनर है, जिसमें हम क्या करते हैं? मुख्तलिफ फसल जो है वो उगाते हैं। ठीक है? एक दो फसल का नाम बताएंगे आप? शाबाश। कनकी हम खाते हैं, तो कनकी का एक फसल है गंदुम। ठीक है? और कपड़े हम पहनते हैं तो कपास की फसल, काटन। ठीक है? तो इस तरीके से और कई फसल हैं जो हम एग्रीकल्चर में उगाते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनका हुनर जो है वो बताते हैं। ठीक है? तो एग्रीकल्चर का जो इल्म हम इसलिए देते हैं कि आपकी जिंदगी की, रोजमर्रा की जिंदगी के मुख्तलिफ चीजें जो हम हासिल करते हैं एग्रीकल्चर से। आपका कपड़ा है तन पर, आपकी खुराक है, उसके बाद घरेलू सामान जो फर्नीचर वगैरह जो है वो भी हम एग्रीकल्चर से हासिल करते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ऊंचा कारोबार है खेती बाड़ी का। अस्सलाम वालेकुम। खेती बाड़ी की अहमियत बहुत बड़ी है। कीअं आहियो पुट? मुंहिंजो नालो डॉक्टर ख़ालिद हुसैन ढिलू आहे ऐं मां बि ज़रई यूनिवर्सिटी टंडो जाम में आहियां, जिथे मां असिस्टेंट प्रोफेसर आहियां, मतिलबु उस्ताद ई आहियां। जीअं तव्हांखे होपो कैनेडा हिकु बहितरीन उस्ताद ॾिनी आहे नंढड़ी फिरदौस जे शकिल में, ईअं ई मां बि उते पढ़ाईंदो आहियां ज़रायत जे बारे में ऐं जीतन जे बारे में। त असांजे ज़रायत जेका माहौल दोस्त आहे, कंहिंखे ख़बर आहे त माहौल दोस्त ऐं माहौल दुश्मन छा आहे? केरु ॿुधाईंदो बा? क्लाइमेट चेंज, माहौल जी तब्दीली। कुझु अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके माहौल खे बहितर कनि थियूं, कुझु अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके माहौल खे ख़राब तरफ़ां। होपो कैनेडा में तव्हां माहौल जे बारे में हिन वक़्त ताईं छा छा पढ़िया आहियो? कंहिंखे जेकॾहिं थोरो बि कुझु अचे थो त उहो मूंखे ॿुधाए त असां ही शइ पढ़ी आहियो माहौल जी तब्दीली जे बारे में, क्लाइमेट चेंज जंहिंखे चऊं था। हिकिड़ी ऑर्फन 2 फैमिलीज़ आहिनि जिथे होपो कैनेडा काल जेको आहे उहो प्लांट्स पोखियल आया आहिनि, जंहिंमें हिकु आहे मोरिंगा
ॿियो आहे न्याज़बू। त मोरिंगा माहौल जी बहितरी लाइ पोखिया विया आहिनि ऐं न्याज़बू जेको आहे उहो छाजे लाइ पोखिया विया आहिनि? मॉस्किटो खे भॼाइण जे लाइ। ठीकु आहे, तव्हांखे ख़बर आहे त मॉस्किटो जेको मच्छर आहे उहो न सिर्फ़ इंसान बल्कि जानवरनि खे बि नुक़सान ॾींदो आहे, ख़बर आहे न भाउ? त जानवरनि जी बि सहूलियत उनजो बि ख़्यालु लाज़मी आहे, छो जो जानवर असांखे छा ॾींदा आहिनि? खीर ॾींदा आहिनि। ठीकु आहे, त जेकर उन्हनि ते मच्छरनि जो हमिलो थींदो त जानवरनि जी सिहत ख़राब थींदी ऐं सिहत ख़राब थींदी त खीर घटि ॾींदा। ठीकु आहे, त उन खे बचाइण जे लाइ, मॉस्किटो खे भॼाइण जे लाइ होपो कैनेडा छा थी करे पई त न्याज़बू पोखिया आहिनि ऐं उन न्याज़बू जो पतनि जो जेको रस आहे उहो असांजा जेके ॿिया फसल आहिनि जीअं मकई थी वियो, भाॼियूं थी वियूं ऐं जेको आहे सो कपह थी वई, इन्हनि फसलनि ते जेके अलॻि अलॻि क़िस्मनि जा जीत अचनि था उहे जीत बि असांजे फसल खे, असांजे माहौल खे ख़राब कनि था। जंहिंमें सुठा जीत बि आहिनि, ख़राब जीत बि आहिनि। त उन ख़राब जीत खे ख़तम करण जे लाइ, ख़ात्मे जे लाइ असां छा कयो आहे, होपो कैनेडा सिंध ज़रूरी यूनिवर्सिटी टंडोजाम में हिकिड़ी वॾी लेबोरेटरी क़ाइमु कई आहे, जिथे जेको आहे सो असां न्याज़बू जो रस कढी पतनि जो ऐं उहो असां उन्हनि फसलनि ते स्प्रे कयूं था पिया ऐं जीतनि जो ख़ात्मो कयूं था पिया। जीतनि जो ख़ात्मो ख़तम थी वेंदो ऐं ईअं ई पोइ वरी असां जेको आहे सो महलो ठाहींदासीं उन जो पतनि जो जूस जो, ऐं पोइ उहो वरी असां जेको आहे सो पेस्ट कंदासीं जानवरनि ते त जीअं उन्हनि ते मच्छर हमिलो न कनि। मुंहिंजो नालो डॉक्टर मुमताज़ आहे ऐं होपो कैनेडा जी तरफ़ां तव्हां वटि आयो आहियां। पाण कुझु ॻाल्हियूं कंदासीं खुराक जे बारे में। तव्हां मां कंहिंखे ख़बर आहे त खुराक छाखे चइबो आहे? केरु ॿुधाईंदो त खुराक छा हूंदी आहे? खुराक छाखे चयो वेंदो आहे या खाधो पाण छाखे चवंदा आहियूं? जी बाबा, खाइण वारी शइ खे, हर उहा खाइण वारी शइ जंहिंमें ग़िज़ायत पूरी हुजे, जेका असांजी जेका वाद वीज आहे उन में मदद करे, उनखे असीं खुराक चऊं था। पाण वटि हिन वक़्तु सिंध में खुराक जी तमामु घणी कमी हुजण जे करे होपो कैनेडा जेको आहे उहो मेल न्यूट्रिशन ते माई मैप जे नाले सां हिकिड़ो प्रोजेक्ट शुरू कयो आहे, जंहिंमें असां मोरिंगा अंडा पराठा जेके आहिनि उहे प्रोवाइड करियूं था उन्हनि ॿारनि खे, उन्हनि फैमिलीज़ खे जिन में ग़िज़ायत जी कमी आहे। ठीकु आहे, हिकु मोरिंगा अंडा पराठा आहे। ॿियो हाणे असां वरी मोरिंगा वीट फ्लोर जेको आहे उहो ॾियूं पिया, त जीअं ॿारनि जी जेका आहे सा ग़िज़ायत पूरी थी सघे, उन्हनि जी वाद वीज, उन्हनि जी जेका ग्रोथ आहे उहा मुकमल थी सघे। जॾहिं ॿारु सिहतमंद हूंदो त उहो पढ़ाई जेको आहे सो ओवरऑल सभिनीनि ॿारनि खे, फैमिलीज़ खे इहा सपोर्ट करे थी त हू उन्हनि जी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करे थी ऐं उन सां गॾोगॾु जेको आहे उन जे लाइ कुझु पैसा जेको आहे सो ठाहींदासीं। तव्हां पंहिंजी ग़िज़ा में कोशिशि कजो मोरिंगा लॻायो, होपो तव्हांखे लॻाए ॾींदी ऐं पोइ उहो पंहिंजी खुराक में इस्तेमालु करियो। घटि में घटि हिकु टाइम जी जेका मानी तव्हांजी आहे उन में तव्हां ज़रूरु मोरिंगा ऐड करियो, उन सां तव्हांजी सिहत सुठी रहंदी, तव्हांखे बीमारियूं जेके आहिनि से कोन विझण ॾियो। ठीकु आहे, ओवरऑल तव्हांजो जेको आहे जेका ग्रोथ आहे उहा जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिरदौस है। मैं ऑर्फन टू प्रॉस्पेरिटी स्कूल गांव मठ में होपो का एक स्कूल है, उसमें एज ए टीचर काम करती हूँ। तकरीबन 6 माह से ये स्कूल चलता आ रहा है। यहाँ तकरीबन जो पहले बच्चे थे वो कम थे, लेकिन अब ज़्यादा होते जा रहे हैं। यहाँ की जो एजुकेशन है वो देख के अब बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं यहाँ एजुकेशन लेने। यहाँ पहले तो बच्चों को दीनी तालीम दी जाती है, कुरान की तालीम जो बच्चे सीखते हैं, और सारा इन्होंने बच्चों ने दुआएं वगैरह याद किए हुए हैं बच्चों ने। और उसके बाद इनकी कंप्यूटर की तालीम होती है। उसके साथ साथ जो स्कूल में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो सारे होते हैं, लेकिन उनके अलावा जो बच्चे ज़्यादातर हासिल नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम और कंप्यूटर की, फॉरेस्ट एंड नेचर डिपार्टमेंट की, वो सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं और कंप्यूटर से सीखते हैं कि हमें काम कैसे करना चाहिए, ऑनलाइन काम कैसे करते हैं, ड्राइंग वगैरह जो सारा काम होता है बच्चे सीखते हैं। इसलिए हमें इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए, क्लासरूम ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे 50+ हैं। और इसके साथ साथ इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमें बहुत अच्छी करनी चाहिए, ताकि हमारा जो पूरा प्रोग्राम है, ऑर्गेनाइजेशन, वो ठीक तरीके से चल सके और बच्चे तालीम ठीक से हासिल कर सकें। जो नाला मुक़द्दस आहे, मां
महापौर कनेडा स्कूल में पढ़ंदी आहियां ऐं मूंखे सुठो पढ़ाईंदी आहे। उर्दू इंग्लिश इहे सभु सब्जेक्ट असांखे पढ़ाईंदी आहे। ACD ते ॾेखारींदी आहे ऐं मोरिंगा जे बाबति ॿुधाईंदी आहे ऐं ॿियो शकल मां असांखे पढ़ायो अथई। इलाही कुझु पढ़ाईंदी आहे असांखे। बिस्मा आहे, मां होपा कनेडा जे स्कूल में पढ़ंदी आहियां ऐं असांखे मिस ॾाढो सुठो पढ़ाईंदी आहे। शकल मां यादि कराया अथई ऐं ॿिए बि सब्जेक्ट सिंधी उर्दू इंग्लिश लैपटॉप ऐं LCD ते ॿियो कुझु सभु कुझु ॾेखारींदी आहे ऐं असांखे ॾाढो पढ़ाईंदी सुठो आहे। असां टाइम ते रोज़ ईंदा आहियूं। पर कंप्यूटर सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथमेटिक और दीनी तालीम और इसके अलावा बहुत चीज़ें हासिल लपे